बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द SCA। इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, जो बीएड, एमएड, एम एजुकेशन और केपी में होने वाले या दूसरे प्रोविंसेस में होने वाले इंडक्शन, जो टीचर्स इंडक्शंस प्रोग्राम है, उसका एक अहम पार्ट है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। तो आज हम इसके फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे और आज का जो टॉपिक है ये आजकल अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के होने वाले एग्ज़ाम में एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडल ऑफ टीचिंग। व्हाट इज़ अ मॉडल ऑफ टीचिंग, या टीचिंग का मॉडल क्या है? A model of teaching is a plan or pattern that we use to design face-to-face teaching in classroom, tutorial settings, or in shaping instructional material. मॉडल ऑफ टीचिंग ये एक ऐसा प्लान होता है, एक ऐसा पैटर्न या तरीक़ा होता है जो क्लास में फेस टू फेस टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फेस टू फेस टीचिंग का मतलब ये है जिस स्टूडेंट सामने बैठे हो और टीचर जो है इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट लेक्चर डिलीवर करता हूँ, इसको फेस टू फेस सेटिंग कहता है। ट्यूटोरियल सेटिंग्स जो मुख्तलिफ ट्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वर्कशॉप्स के लिए या दूसरे ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, और इन शेपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, और वो मटेरियल वो सीक्वेंसेस जो क्लास में या दूसरी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब तरीक़ों को जो है एक पैटर्न के अंदर लाया जाता है और उस पैटर्न को जो है मॉडल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। इसको ज़रा आगे एक्सप्लेन करते हैं। द यूज़ ऑफ मॉडल इज़ वेरी ओल्ड। Socrates, the Greek philosopher, used his own model of question answer. मॉडल ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल जो है ये बहुत पुराना है। सोक्रात जो फिलासफी में सबसे पहला फिलासफर भी माना जाता है, उसने सबसे पहले मॉडल ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल किया था। सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग is to improve the instructional effectiveness in an interactive atmosphere. मॉडल ऑफ टीचिंग का सबसे अहम मकसद ये है कि इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर में, मतलब जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे से और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक ऐसे एटमॉस्फेयर की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो कारआमदी है, उसको इंक्रीज़ करते हैं, इसके इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सबसे अहम मकसद है मॉडल ऑफ टीचिंग का। अब हम आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में मॉडल ऑफ टीचिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फंक्शंस और इसके असम्पशंस और एलिमेंट्स, ये सब जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स में अक्सर आते हैं। तो जो सेकंड हेडिंग है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग, कि मॉडल ऑफ टीचिंग की खुसूसियात क्या है। सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of a model of teaching. नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है मॉडल ऑफ टीचिंग है वो है साइंटिफिक प्रोसीजर। साइंटिफिक प्रोसीजर
It is the first characteristic of a model of teaching. It is a systematic procedure. It is a systematic procedure to modify the behavior of the learner. To modify the behavior of the learner. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग मॉडल की ये है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक तरतीबवार प्रोसेस है। इसमें हर स्टेप जो है वो तरतीब से होता है। एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए लर्नर या सीखने वाले की बिहेवियर में चेंजेस लाई जाती है, इसकी बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है मॉडल ऑफ टीचिंग का वो है साइंटिफिक प्रोसीजर। ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता, इसके हर स्टेप जो है ये एक तरतीब से चलता है। रैंडमली मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी है स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। All models of teachings, all models of teaching specify the learning outcomes. Specify the learning outcomes. In detail. The second characteristic of the model of teaching is the specification of learning outcomes. मॉडल ऑफ टीचिंग की दूसरी खुसूसियात जो है वो लर्निंग आउटकम या सबक के मकासद को स्पेसिफाई करते हैं। ऑल मॉडल ऑफ टीचिंग स्पेसिफाई द लर्निंग आउटकम्स इन डिटेल। हर टीचिंग मॉडल पढ़ाई की जो मकासद है उसको डिटेल में जो है स्पेसिफाई करते हैं कि एक ख़ास लेसन के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़। और आजकल हम अगर बुक्स में देखें तो हर बुक में हर लेसन के स्टार्ट में ये जो LOCs है लर्निंग आउटकम्स उसको कहा जाता है। उसको दिया जाता है कि इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स इसके काबिल होगा कि इस टॉपिक को समझेगा। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करते हैं। वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। The third characteristic of the model of teaching is the specification of environment. Specification of environment. Every model of teaching specifies in definite terms. Every model of teaching specifies in definite terms the environmental conditions under which the environmental conditions under which
A student response should be observed. A student's response should be observed. Third characteristic of model of teaching is the specification of environment. हर मॉडल ऑफ टीचिंग इस खास environment को specify करता है. Every model of teaching specifies in definite terms the environmental conditions under which a student's response should be observed. हर मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो वाज़ेह अल्फाज में माहौल की जो है वजाहत करता है, माहौल की तारीफ करता है कि एक स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको एक ख़ास एनवायरनमेंट जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाएगा. मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए एक ख़ास एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी. अगर वो ख़ास एनवायरनमेंट या स्पेशल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को अगर अवेलेबल ना हो तो उनकी जो लर्निंग है वो लाजमी तौर पर मुतासर होगा. So it is that the third characteristic of a model of teaching. Now we are moving towards the fourth characteristic of a model of teaching, which is criteria of performance. The fourth characteristic of a model of teaching is the criteria of performance. A model specifies the criteria of acceptable performance. A model of teaching specifies the criteria of acceptable performance. Which is accepted from the students. Which is accepted from the students. हर मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो क्या करता है? अ मॉडल ऑफ टीचिंग स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस विच इज़ एक्सेप्टेड फ्राम द स्टूडेंट्स. ऐसे पैमाने का इंतखाब करता है, ख़ास जो है गेज हर स्टूडेंट के लिए वो मुकर्रर करता है, ख़ास परफॉर्मेंस की लेवल को मुकर्रर करता है जिससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स की लर्निंग लेवल को, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को मापा जा सके. तो इस पैमाने की स्पेसिफिकेशन को क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है. And the fifth characteristics of a model of teaching is the specification of operations. The fifth characteristic of a model of teaching is the specification of operations. Specification of operation. All models of teaching specify mechanisms. All models of teaching specify mechanisms that provide for students reaction and interaction with environment.
The fifth characteristic of a model of teaching is the specification of operations, the specification of procedures, the specification of methods, whichever name you may be used. All model of teaching specify mechanisms that provide for students' reaction and interaction with environment. हर मॉडल ऑफ टीचिंग ऐसे मेथड्स की, ऐसी ऑपरेशंस की, ऐसी प्रोसीजर्स की स्पेसिफिकेशन करता है जो एक स्टूडेंट्स क्लासरूम में बिहेव कैसे करेगा, कैसे वो लर्निंग करेगा, कैसे वो क्लास को अटेंड करेगा, उसका रिस्पांस टीचर के साथ कैसा होगा, और इसके साथ साथ उसके एनवायरनमेंट में बिहेवियर कैसा होगा। तो वो सब प्रोसीजर्स को, सब प्रोसेसेस को स्पेसिफाई करता है। वो एक से डेफिनेट टर्म्स में इसकी स्पेसिफिकेशन करता है कि एक स्टूडेंट को किस तरह क्लासरूम में भी बिहेव करना है और एनवायरनमेंट में भी, क्लासरूम के बाहर जो एनवायरनमेंट में उसमें भी कैसे वो बिहेव करेगा। So there are 5 characteristics of a model of teaching which we have explained here in the classroom, and I hope you have understand these characteristics of a model of teaching. Now we are moving towards the functions of a model of teaching. That what are the functions of a model of teaching? Now we are going to discuss the functions of a model of teaching. So let us discuss functions of a model of teaching. So following are the functions of a model of teaching. मॉडल ऑफ टीचिंग्स के फंक्शंस किया है वो अब हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज गाइडेंस। A model of teaching serves as a useful purpose. A model of teaching serves a useful purpose of providing guidance in specific terms what the teacher has to do. First function of a model of teaching is the provision of guidance to the teachers. A model of teaching serves a useful purpose of providing guidance in specific terms what the teacher has to do. मॉडल ऑफ टीचिंग का सबसे पहला काम, सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि वो टीचर्स को, असातिज़ा को रहनुमाई फराहम करता है कि वो किस तरह अपनी ड्यूटीज़ को, अपने लेक्चर मेथड्स को परफॉर्म करेगा और किस तरह वो अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट या फ़ायदा पहुंचा सके। The second purpose of a model of teaching is the development. The second function of a model of teaching is the development of curriculum. The second function is the development of curriculum.
A model of teaching helps in the development of curriculum. A model of teaching helps in the development of curriculum. For different classes at different levels of education. For different classes at different levels of education. The second function of a model of teaching is the development of curriculum. A model of teaching helps in the development of curriculum for different classes at different levels of education. मॉडल ऑफ टीचिंग का दूसरा अहम काम जो है वो करिकुलम को डिज़ाइन करना है, करिकुलम को बनाना है। वो मुख्तलिफ़ क्लासेस के लिए तालीमी इदारों में मुख्तलिफ़ क्लासेस के लिए मुख्तलिफ़ लेवल्स के लिए जो करिकुलम बनता है उसके लिए एक राह हमवार करती है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। सो इट इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। सो वी आर मूविंग नाउ टुवर्ड the third function of model of teaching, which is the specification of instructional material. The third function of a model of teaching is the specification of instructional material. The third function is the specification of instructional material. So, a model of teaching specifies a detailed instructional material. A model of teaching specifies a detailed instructional material. Instructional material which a teacher can use to bring a desirable change in the personality of a learner. Change in the personality of a learner. The third function of a model of teaching is the specification of instructional material. A model of teaching specifies a detailed instructional material which a teacher can use to bring a desirable change in the personality of a learner. तीसरा अहम फंक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग का ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशन करता है कि एक टीचर को कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्लासरूम में कि वो स्टूडेंट्स की बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज लाए। सो जो मटेरियल्स इंस्ट्रक्शन में या क्लासरूम में इस्तेमाल होते हैं एक मॉडल ऑफ टीचिंग उसकी स्पेसिफिकेशन करता है। And the fourth function of a model of teaching is the improvement of teaching. So this is the fourth function of a model of teaching. Fourth function is the improvement of teaching.
improvement of teaching. A model of teaching helps in the teaching learning process. A model of teaching helps in the teaching and learning process. Teaching and learning process. And increase effectiveness of teaching and increase effectiveness of teaching. The fourth important function of a model of teaching is the improvement of teaching. A model of teaching helps in the teaching and learning process and increase the effectiveness of teaching. मॉडल ऑफ टीचिंग का 14 अहम काम जो है वो है टीचिंग मेथड में, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाना, इसमें बेहतरी लाना। एक मॉडल ऑफ टीचिंग की वजह से टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। So these are the four functions of a model of teaching. I hope you have understand the model of teaching, and now we are moving towards the third important subtopic of a model of teaching, which is the assumption of a model of teaching. So now we are going to discuss the assumptions of a model of teaching या मॉडल ऑफ टीचिंग की मफरूज़ी, जिसके बेस पर, जिस assumptions के बेस पर, जिन मफरूज़ों के बेस पर मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो डेवलप्ड होता है। सो assumptions of model of teaching. Assumptions of model of teaching. There are four assumptions of a model of teaching. There are four assumptions of a model of teaching. Number first is the first assumption. First assumption. First assumption क्या है, डिस्कस करते हैं। The first assumption underlying all models is that the first assumption underlying all models is that teaching is the creation of proper environment. Teaching is the creation of proper environment. First assumption teaching models का किया है। The first assumption underlying all models, teachings के तमाम मॉडल्स जो है वो पहले assumption पर बेस करता है, और वो किया है टीचिंग इज द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट। एक टीचिंग प्रोसेस के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए एक ख़ास माहौल की ज़रूरत होगी। अगर वो एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो हमको हासिल नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द फर्स्ट assumption of a model of teaching, and now we are discussing the second assumption of model of teaching. So the
Second assumption is second assumption. The second assumption is that the second assumption is that content, skill, instructional rules, content, skills, instructional rules, social relationship, social relationship, types of activities, types of activities, all form an environment system. All form an environment system. Second assumption, the second assumption is that content, skills, instructional rules, social relationship, types of activities all form an environmental system. टीचिंग के लिए जो एनवायरनमेंट है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो है कंटेंट. कंटेंट से मुराद वो मवाद है जिसको पढ़ाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक. स्किल्स वो तरीके, इंस्ट्रक्शनल रूल्स वो जाविये, वो कवानीन जिसके अंदर जो टीचिंग के लिए मुकर्रर है. सोशल रिलेशनशिप तलबा और असातिज़ा के दरमियान रवाबित. एंड टाइप्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ जो एक तालीम इदारे के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं ये सब मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाता है, जो फर्स्ट एजम्पशन में हमने डिस्कस की थी. टीचिंग एज द क्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट इन चीज़ों पे बेस करता है. अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड एजम्पशन को कि व्हाट इज़ द थर्ड एजम्पशन ऑफ अ टीचिंग मॉडल. Third assumption different combinations of those elements, different combinations of these elements form different types of environment. Which gives different outcomes. Third assumption is that different combination of these elements form different types of environment. जो elements जो हमने second assumption में discuss की थी जिसमें content था, skill था, instructional rules थे, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ थी, इसको जब मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में डाला जाता है तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करते हैं और हर एक इन्वायरमेंट के फिर अपने अपने आउटकम्स होते हैं. तो ये था थर्ड एजम्पशन ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ एंड फाइनल एजम्पशन ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग. So the fourth assumption.
The fourth assumption is that a model of teaching create an environment. Model of teaching create an environment provide rough specification for environment in the classroom teaching learning process. Classroom teaching learning process. Fourth assumption is that model of teaching create an environment, provide rough specification for environment in the classroom teaching learning process. जो third assumption है relate करता है क्या है मॉडल ऑफ टीचिंग हर क्लासरूम में टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए एक रफ स्पेसिफिकेशन करता है उनके लिए माहौल फराहम करता है और हर क्लासरूम की इस बात की स्पेसिफाई करते हैं कि किस क्लासरूम में किस एनवायरनमेंट को होना चाहिए जिसके लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज किया जाए. तो ये थे मॉडल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, functions of model of teaching and assumption of model of teaching which we have discussed in this lecture. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के पेपर का जो बार बार AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रिपीट हो रहा है. सो काइंडली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन in this manner which I have presented on this whiteboard. So please like and subscribe to my channel so that you can get the upcoming lectures on time. Thank you.